Members may take their seats. All those members against Clause 7 may rise in their seats. "65 members have voted in favor of Clause 7 and none against it, so the motion is carried by the votes not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 7 therefore forms part of the bill unanimously." Clause 8. There is no amendment in Clause 8. The question is that Clause 8 do form part of the bill. All those members who are in favor of the Clause 8 may rise in their seats. आप बैठे रहें. Count to be made. Oh, बैठ जाएं. Take their seats. All those members against Clause 8 may rise in their seats. 65 members have voted in favor of Clause 8 and none against it, so the motion is carried by the votes not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 8 therefore form part of the bill unanimously. Clause 9. There is no amendment in Clause 9. The question is that Clause 9 do form part of the bill. All those members who are in favor of Clause 9 may rise in their seats. Count to be made. Members may take their seats. Members may take their seats. All those against Clause 9 may rise in their seats. 65 members have voted in favor of Clause 9 and none against it. So the motion is carried by the votes of no less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 9 therefore form part of the bill unanimously. Clause 10. There is no amendment in Clause 10. The question is that Clause do form part of the bill. All those members who are in favor of the Clause 10 may rise in their seats. Count to be made. Please take your seats. All those members against Clause 10 may rise in their seats. 65 members have voted in favor of Clause 10 and none against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 10 therefore form part of the bill unanimously. Clause 11. There is no amendment in Clause 11. The question is that Clause 11 do form part of the bill. All those members who are in favor of Clause 11 may rise in their seats. Count to be made. ताज हैदर साहब, मैं देख रहा हूँ आपका हाथ, आपका भी मैं, शकूर साहब. Count to be. Please take your seats. All those members against may rise on their seats. 65 members have voted in favor of Clause 11 and none against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 11 therefore form part of the bill unanimously. Clause 12. There is no amendment in Clause 12. The question is that Clause 12 do form part of the bill. All those members who are in favor of the Clause 12 may rise in their seats. I have seen the hands. Count to be made. All those members against Clause 12 may rise in their seats.
65 members have voted in favor of clause 12 and none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 12 therefore forms part of the bill unanimously. फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आपका लगता है कि आप चले जाएंगे अमेरिका? Clause 13. There is no amendment in clause 13. हाँ, May the chair allow me to put the amendment in clause 13? 13, 1-3 में सर. Yes, ठीक है. मैंने समझ जो पीछा गुजर गया. सर मान जाओ ना. There is an amendment in clause. सर मैं पढ़ देता हूँ. हाँ पढ़ें. Sir, in clause 13, sir, in Article 191A, titled as Constitutional Benches of Supreme Court, Clause 2 of 191A may be substituted and read as such. The most senior judge amongst judges nominated under Clause 1 shall be called the most senior judge of the constitutional benches. And sir, in clause 4 of this, इसी में सर 3 के B में आप सर कर दिया है, जिसको काट दिया उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया. क्लॉज 3 के B में सर, after the words order of a high court in the second line passed under Article 199, these words may be deleted. It would be read as the appellate jurisdiction of Supreme Court under clause 3 of Article 185, where a judgment or order of a high court involves constitutionality of any law or substantial question of law as to interpretation of the Constitution. It would be read as under. There is one other, sir, there is one other in clause 4. The word presiding may be deleted and most senior judge of the constitutional benches be added. Okay. I now put the amendment to the House. Those who are in favor of the amendment may say aye. Those against it, the amendment say no. I think the ayes have it, the amendment is adopted unanimously. The question 13 do form part of the bill. All those members who are in favor of these clauses as amended may rise in their seats. Up. Count to be made. Members may take their seat. Anybody oppose? "65 members have voted in favor of clause 13 as amended and none against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 6 as amended therefore form part of the bill unanimously. Clause 14. There is amendment in clause 14. No. No amendment. Please move clause number 14. ये क्लास 14 आपने वो करना है. मेरे पास जो अमेंडमेंट है दैट इज इन क्लास 16 से. नहीं मेरे पास है. ये मेरे पास जो ऑफिशियल है, दिस इज देयर इज नो अमेंडमेंट इन क्लॉज 14. The question is that clause 14 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 14 may rise in their seats. Count to be made. I've seen your hands. All those against the clause may rise in their seats. 65 members have voted in favor of the clause 14 and none
against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 14 therefore do form part of the bill unanimously. Clause 15, there is no amendment. The question is that clause 15 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 15 may rise in their seats. Count to be made. Members may take their seats. All those against clause 15 may rise in their seats. 65 members have voted in favor of clause 15. None against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 15 therefore form part of the bill unanimously. Clause 16. There is an amendment in the name of Senator Azam Nazir Tarar in clauses 16. Please move the amendment. Mr. Chairman, I move that in Constitution 26th Amendment 2024 as introduced in House in Clause 16 in proposed Article 202A, 1 in Clause 5 after the expression 26th Amendment Act 2024 of 2024, the expression subject to Clause 7 shall be inserted. And 2 may, after Clause 6, the following new clause shall be added, namely 7. This article shall come into force if in respect of the Islamabad High Court, both houses of Majlis Shura Parliament in the joint sitting, and a High Court, the respective provincial assembly, through a resolution passed by majority of the total membership of the joint sitting or the respective provincial assembly as the case may be, give effect to the provisions of this article. मैं explain कर दूँ, जो High Courts में constitutional benches हैं, वो प्रपोज कर दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाज़त दे दी है, लेकिन सूबों को सामने रखते हुए और वहाँ की ज़रूरियात को सामने रखते हुए या तैयारी के लिए वक्त दरकार होते हैं, तो उसके लिए ये जो आइन ने इख्तियार सूबाई असम्बली को इन केसेस ऑफ प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स और जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट को इन केस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट दिया है कि वो जब अपनी टोटल मेंबरशिप की अक्सरियत से यानी 51% ऑफ द टोटल मेंबरशिप से रेजोल्यूशन पास करें तो ये अडॉप्ट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस इन देयर रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स. सो दिस इज़ फॉर एक्चुअली सर जो हमारे सूबों के हकूक़ और इख्तियारात हैं उनको सामने रखते हुए वफाक ने और पार्लियामान ने ये प्रपोज किया. मेरी गुजारिश होगी कि इस अमेंडमेंट के साथ इस क्लॉज को पास करें. And now put the amendment to the House. Those who are in favor of the amendment say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The amendment is adopted. The question is 16A और 16B. as the नहीं सर वो पुट करनी पड़ेगी. ये इसमें और the question is that clause 16 amended do form part of the bill. ये नाज़िम नज़ीर तारड़ साहब ये कुछ करेक्शन करना चाह रहे थे. नहीं ये वो अमेंडमेंट से हमारी 16A एंड 16B. जी सर आपकी आएगी ना. ये तो मैंने पुट कर दिया. जी सर. हाँ प्लीज all those members in favor of it may rise on their seat. Count to be made. Please take your seats. Members may take their seat. Those against may rise on their seat. 65 members have voted in favor of clause 16 as amended, none against it. So the motion is carried by votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 16 as amended, therefore forms part of the bill unanimously. ये इसकी okay. There is an amendment in the name of Senator Kamran Murtaza and others in insertion of new clauses 16A and 16B. Please move the amendment.
Sir, it ये is, आपके हाँ. हाँ Sir, it is moved on behalf of, on my behalf and on behalf of Maulana Ataur Rahman and Maulvi Abdul Wasi, that the Constitution's 26th Amendment Bill 2024 as introduced in the House after Class 16, the following new clauses 16A and 16B shall be inserted, namely, Amendment of Article 203C of the Constitution in Article 203C in Class 3 after the word High Court, the words are a judge of the Federal Shariat Court qualified to be a judge of the Supreme Court shall be inserted, and 16B, Amendment of Article 23D of the Constitution in Article 23D in Class 2 in the proviso for the full stop at the end a colon shall be substituted, and thereafter the following new proviso shall be added, namely, provided further that appeal against decision given after the commencement of the Constitution 26th Amendment Act 2024 shall be disposed of within 12 months, whereafter the decision shall take effect unless suspended by the Supreme Court. Do you oppose? कामरान साहब ने डिस्कस भी किया और कमेटी में भी जब ये था एक दफ़ा ये यूनानिमसली पास हुई थी, यानी कि उनकी रिकमेंडेशन में भी ये शामिल है, और हमारे जो साथी सेनेटर्स हैं वो पेश करना चाहते थे अपनी तरफ से, तो इन्होंने इसलिए इसे अमेंडिंग फॉर्म में पेश किया। सर, जो इनकी पहली है उसमें ये कहा गया है कि पहले हाई कोर्ट से या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जजेस एलिवेट होते हैं, जिनकी 15 साल वकालत हो हाई कोर्ट की, या 5 साल हाई कोर्ट की जजशिप की हो, या 15 साल। यहाँ पे हम कर रहे हैं कि जो शरीयत कोर्ट में जुडिशल साइड पे जजेस हैं, इफ़ दे क्वालिफाई टू बी अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट दे मे बी अपॉइंटेड, एक क्लैरिटी दे रहे हैं। और दूसरे में जो फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसला जात है, मैंने अर्लियर बता दिया था, उसमें ये टाइम फ्रेम दे रहे हैं। आई डोंट अपोज सर। Don't oppose. I now put the amendment to the House. Those who are in favor of the amendments may say aye. Those against the amendment say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The amendment is adopted unanimously. The question is that clause 16 and 16B do form parts of the bill. All those members who are in favor of 16A, 16B may rise on their seat. Counts to be made. Members may take their seats. "65 members have voted in favor of clause 16A and 16B. None against it. So the motion is carried by votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clauses 16A and 16B therefore forms part of the bill unanimously." That includes 16A, 16B. Clause 17. There is no amendment in clause 17. The question is the clause 17 to part of the bill. All those members who are in favor of clause 17 may rise in their seats. Count to be made. इमल वली साहब, आप सबसे पहले खड़े होते हैं। The question count to be made. अच्छा, 65 members have voted in favor of the clause 17 and none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 17 therefore forms part of the bill unanimously. Clause 18. There is no amendment in clause 18. The question is that clause 18 to form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 18 may rise in their seats. Count to be made. Please take your seats. Those who are against it, nobody stood up. कोई against में हो तो मैं rise up.
65 members voted in favor of clause 18 and none against it. So the motion is carried by votes not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 18 therefore forms part of the bill unanimously. Clause 19. There is no amendment in clause 19. The question is the clause 19 to form part of the bill. All those members who are in favor of clause 19 may rise in their seats. Count to be made. Please take your seats. Anybody against it? You are against? आप बैठ जाए, सब बैठ जाए. 65 members have voted in favor of the clause 19 and none against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 19 therefore forms part of the bill unanimously. Clause 19. There is no amendment in clause 19. The question is the clause 19 to form part of the bill. There is an amendment. There is an amendment in the name of Senator Kamran, Murtaza and others, which others नहीं रहना जी amendment. There is an amendment in the name of Senator Kamran, Murtaza and others, which is insertion of new clauses 19A and 19B. Is it okay, Law Minister? 19A and 19B. Please move the amendment. Sir, there is a request for insertion of new clauses 19A and 19B, sir. It is moved on my behalf and Maulana Taur Rahman, Maulvi Abdul Wase, that in the Constitution 26th Amendment Bill 2024 as introduced in the House after clause 19, the following new clauses 19A, ji sir, 19, the following new clauses 19A and 19B shall be inserted, namely 19A, amendment of Article 229 of the Constitution. In the Constitution, in Article 229, for the expression 2/5, the expression 1/4 shall be substituted. And 19B, amendment of Article 230 of the Constitution. In the Constitution, in Article 230, in Clause 4, for the full stop at the end, a colon shall be substituted, and thereafter the following proviso shall be added, namely, provided that the final reports in any case shall be considered within 12 months after it has been laid. Law Minister साहब. बस हुई थी कमेटी में भी, कल मैंने कैबिनेट में भी कहा, छोटी छोटी 2 अमेंडमेंट्स हैं काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी से मुतल्लिक़ है. एक वो जो आप बिल जब उस पर करना होता है तो पहले वो 40% था, आप कहते हैं 25% मेंबरशिप के साथ आप रेज़ कर सकते हैं, तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन सर. जी सर. सर बस मैं आपकी इजाज़त से सिर्फ इसमें ये कामरान मुर्तज़ा क्योंकि मूवर हैं सर, बहुत सारी प्राइवेट लेजिस्लेशन जो है वो अगर बेहतरी के लिए लोगों की बस ये ना हो कि इट मस्ट नॉट बी यूज्ड एज अ स्पैनर कि वो इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल को भेज दिया और वहाँ पे हुआ, तो ये रहा ये कंसर्न. ये पहले मूव होती थी 40% ऑफ टोटल मेंबरशिप के साथ, हाँ, और उसे हमने 25% किया, उस पर वो उसका कोई ताल्लुक नहीं. हाँ, Now I put हाउस सर जब काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को रेफर करना होता है कोई मैटर, तो उसमें था कि 40% ऑफ द मेंबरशिप, अब उसे 25% 1/4 कर सकते हैं किसी मैटर को ऐसे को जिस पे 1/4. I now put the amendment to the House. Those who are in favor of the amendment may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The amendment is adopted unanimously. Amendment shall be decided. The question is clause 19A and 19B do form part of the bill. All those members who are in favor of the clauses 19A and 19B may rise in their seats. Count to be made. Please take your seats. 65 members have voted in favor of clause 19 and 19B. Against it, none against it. So the motion is carried by votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clauses 19A, 19B therefore forms part of the bill unanimously.
Clause 19, there is no amendment in clause 19. 20. There is amendment. There is no amendment in clause 20. The question is that clause 20 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 20 may rise in their seats. Counting to be made. Please take your seat. All those members against clause 20 may rise in their seats. 65 members have voted in favor of clause 20 and none opposed against it, so the motion is carried by votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 20 therefore form part of the bill unanimously. There is no amendment in 21. The question is that clause 21 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 21 may rise in their seats. Count to be made. Have seen your hands. Please take your seats. Those who are against may rise on their seats. 65 members have voted in favor of clause 21 and none against it, so the motion is carried by the votes of not less than the 2/3 of the total membership of the House. Clause 21 therefore form part of the bill unanimously. 22. There is no amendment. The question is that clause 22 do form part of the bill. All those members who are in favor of clause 22 may rise in their seats. Count to be made. Please take your seats. Members may take their seats. All those, anybody, those who are against, anybody against? You are against? Now, फिर मुझे ये पढ़ने दें. 65 members have voted in favor of clause 22, none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 22 therefore forms part of the bill unanimously. Clause 1, the preamble and the title of the bill. We may now take up clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that clause 1, the preamble and the title of the do stand part of the bill. All those members in favor of it may rise on their seats. Count to be made. Please take your seats. All those against it. काकर साहब आप तशरीफ रखें, मतलब काउंट हो जाएंगे. 65 members have voted in favor of the clause 1 preamble and title of the bill and none against it. So the motion is carried by votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 1 preamble and the title of therefore form part of the bill unanimously. Clause 1 2D. Legislative business. Senator Azam Nazir Tarar Saab, Minister for Law and Justice, move order number 2D. Thank you, Mr. Chairman. I, Minister for Law and Justice, to move that the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024 be passed. It has been moved that the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024 be passed. As per rules of the decision of the motion will be by division. The procedure regarding voting of division is mentioned in third schedule of the rules of procedure and conduct of business in the Senate 2012. As per procedure, the division bells will be rung for 2 minutes to enable the members not to present in the chamber to return to their places. Immediately after the bells stop ringing,
All the entrance of the lobbies will be locked, and the Senate staff posted at each entrance will not allow any entry or exit through these entrances until the division has concluded. I will then put the motion before the House, and the members who are in favor of the motion will move to right, and against it left divide. According as they wish to vote, members will then proceed to the ayes or the noes lobby, therefore pass in a single file before the tellers. On reaching the desk of the tellers, each member will in turn call out a division number which has been allotted to him for this purpose. The tellers will then mark off the number of the division list simultaneously, calling out the names of the member. In order to ensure that this vote has been properly recorded, the member should not move off until he has clearly heard the teller thus call out his name. The division number allotted to each member has been communicated separately, which is marked on the seat card of each member. When the voting process will be completed in the division lobbies, the tellers will present division list of the secretary, who will count the votes recorded thereon and then present the total of the ayes and noes to me. I will then announce the result of the House. So division bells may be rung for 2 minutes to enable the members not present in the chamber to return to their places. अगली पिछली माफ़ी उनकी अगली फ्लाइट आप तो उधर जाएं। अब तो प्रोसेस डिवीजन में चला गया, अब हम बात नहीं कर सकेंगे, डिवीजन हो रही है। बप्पी साहब, आप लाउंज में जाकर काउंट करना है, आपने लाउंज में काउंट करना है, लॉबी में। ये कंसेशन सर मुल्तान वालों के लिए। ये कोई नाम नहीं लेने हमने। दो मिनट का बेल रिंग हो रही है। Both sides should go. दो मिनट्स हो गए, 2 मिनट्स हो गए। The Senate staff may lock all the entrances to the lobbies. I now put the motion before the House. The question is that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024, be passed. The members along with their division numbers may please move either to the ayes or right to the noes to my left as they wish. Now everybody can move. Leader of the House wants that the opposition go first.
छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर शिकवार मंजूरी का अमल जारी है। 26 में से 22 शिकों की मंजूरी इस वक्त तक हो चुकी है और आपको बताएं कि सेनेट इजलास चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत जारी है। सेनेट इजलास चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत जारी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में तरमीम पेश की और कहा कि 26वीं आईनी तरमीम पेश करना चाहता हूँ। आईनी तरमीमी बिल को ज़िम्नी एजेंडे पर ज़ेर गौर लाया जाए। इसके साथ ही वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि आईनी तरमीमी बिल पर बात हुई जिस पर कमेटी तश्कील दी गई और कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातें थीं, अपोजिशन से भी बात की गई है। वज़ीर कानून ने कहा कि JUI की मुशावरत से मुसव्वदे पर इत्तेहादी जमातों का इत्तफाक़ राय हो चुका है। और अभी आपको बताते चलें कि इस वक्त जो शिकवार मंजूरी हो रही है 22 शिकों की मंजूरी दे दी गई है। और अगर हम बात करें सेनेट में हुकूमत के नंबर की तो 58 से बढ़कर 65 हो गया है। 26वीं आईनी तरमीमी बिल की शिकवार मंजूरी का अमल इस वक्त जारी है। आइन के तहत शिकवार मंजूरी में हर शिक के लिए 2/3 अक्सरियत होना लाजमी है। सेनेट इजलास में पहली शिक मंजूर हो गई और 65 अरकान ने शिक नंबर 2 के हक में वोट दे दिया था, हाँ जी। और इस तरह सेनेट में हुकूमत का नंबर 58 से बढ़कर 65 हो गया था। आईनी तरमीम के हक में हुकूमती वोट 58, BNP के 2, JUI के 5 वोट शामिल हैं, जबकि सेनेटर कासिम रोंजो और सेनेटर नसीमा एहसान ने तरमीम के हक में वोट दिया। तरमीम की शिकवार मंजूरी के दौरान PTI, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM के अरकान ऐवान से चले गए। ख्याल रहे कि हुकूमत को सेनेट में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए और इसे 64 वोट दरकार हैं, जबकि शिकों की अगर बात करें मंजूरी की तो 65 वोटों के साथ शिक जो है वो मंजूर हो रही है और 22 शिकें मंजूर हो चुकी हैं। अदील बड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, आगाह कीजिएगा, इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम की तमाम 22 शिकें जो हैं वो मंजूर कर ली गई हैं और मौलाना फजल रहमान की जमात की जो शिकें इसमें 4 शामिल की गई हैं, उनकी मंजूरी जो है पहले जो क्लास वाइज मंजूरी जो है वो की गई और 65 अरकान जो है उन्होंने तमाम शिकों के हक में वोट दिया। और इस वक्त 2 लॉबीज जो हैं वो बनाई गई हैं, आइज और नो की। तो जो अरकान इसके हक में हैं उनको ये कहा गया है चेयरमैन सेनेट की जानिब से कि वो आइज की लॉबी में चले जाएं। तो इस वक्त जो आइज की लॉबी है यानी जो इसके हक में है वो इस वक्त उनकी कतार देखी जा सकती है। जो डेस्क बनाया गया है आइज की लॉबी के दरवाजे के बिल्कुल साथ ही, और वहां पर लोग अपना नाम जो है वो देखने के बाद, अपना नाम दर्ज करवाने के बाद जो है वो उस लॉबी में दाखिल हो रहे हैं। लॉबी में दाखिल होने के बाद जो काउंटिंग है वो की जाएगी। और जो अभी तक आप देख सकते हैं कि ऐवान में सिर्फ अब्बास जो है वो मौजूद हैं जो कि इसके खिलाफ वोट दे रहे हैं। और वहां पर बिल्कुल ऑलमोस्ट खाली पड़ी है लॉबी जो नो की है। तो आइस की लॉबी के बाहर जो है वो तकरीबन कोई 15 से 20 के करीब अफराद जो हैं वो इस वक्त अपना नाम फहरिस्त में दर्ज करवाने के बाद अंदर जा चुके हैं। और इससे पहले हेड काउंट जो हुआ वो क्लॉज वाइज हेड काउंट हुआ और तकरीबन तमाम जो क्लॉजेस हैं उनमें 65 अरकान जो हैं उन्होंने वो इसके हक में वोट दिया। और जो हुकूमती इत्तेहाद के अलावा जो JUI, फे और BNP जो हैं उनके अरकान ने वोट दिया। तो ऐसे में जो एक मरहला है उसमें इस की क्लॉज बाय क्लॉज मंजूरी जो है वो 65 अरकान यानी कम अज कम 64 अरकान जो है वो दरकार थे 2/3 अक्सरियत के लिए। तो 65 अरकान ने इसके हक में वोट दे के एक मरहला मुकम्मल कर दिया। किसी भी एक जो क्लॉज है उसमें कोई मुखालफत में वोट नहीं आया। तो 65 अरकान जो है अब वो दाखिल हो रहे हैं आइज लॉबीज में। और वहाँ पर अब आखिरी मरहला है जिसमें वहाँ पे जो फहरिस्त में दर्ज कराने के बाद वो काउंट होगा और वहां पर हेड काउंट के बाद जो मेंबर हैं उनके दस्तखत भी होंगे। ये दस्तखत और वो डॉक्यूमेंट जो है उसको काउंट करने के बाद चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी जो है वो अनाउंस करेंगे कि जो आईनी तरमीम का जो मसवदा है वो ऐवान बाला ने मंजूर कर लिया। जी अदिल, हमारे साथ ही रहिएगा। वकार ने भी हमें ज्वाइन किया। वकार, यकीनी तौर पर हम देख रहे हैं कि एक मरहला जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, मैं सेनेट हॉल के अंदर ही मौजूद हूँ और इस वक्त जो फ्लोर है डिवाइड किया गया है, उसमें जो चेयरमैन सेनेट हैं उनके जो राइट साइड पे लॉबी है, वहाँ पर जो आईनी तरामीम है इसके हक में जो राकीन हैं उनके डिवीज़न की गई है और वो उनके आगे एक नामों की फहरिस्त है जहाँ पर वो जो है बाकायदा तौर पर उनके नाम के आगे टिक लगाकर जो है वो आइस की लॉबीज में दाखिल हो रहे हैं, जिसमें जो बीएनपी मैंगल के 2 सेनेटर हैं जिनकी पार्टी पॉलिसी लाइन के मुताबिक जो है वो जो उनके सरबराह अख्तर मैंगल हैं और उन्हें तहरीरी तौर पर भी ये जारी किया गया था कि वो इस आईनी तरमीमी बिल की मुखालफत करेंगे, लेकिन उनके जो 2 सेनेटर हैं जिसमें खातून सेनेटर नसीमा एहसान है और इसके अलावा जो कासिम रोंजो है, उन्होंने भी इन आईनी तरमीमी बिल की जो है वो हिमायत की और वो आइस की जो लॉबीज हैं उसमें बाकायदा तौर पर अपने नाम के इंदराज के बाद जो है वो दाखिल हुए हैं, जबकि जो अपोजिशन की लॉबीज हैं वहाँ पर जो पीटीआई के 2 और इसके अलावा जो मुत्तहिदा मजलिस अमल के जो सेनेटर हैं वो यहाँ पर मौजूद है। कुल अपोजिशन के जो 4 सेनेटर्स हैं वो इस वक्त जो है वो ऐवान में मौजूद हैं। हुकूमत को इस आईनी तरमीम के लिए जो है वो 64 अरकान की हिमायत दरकार थी। हुकूमत और इसके इत्तेहादियों की जो कुल स्ट्रेंथ थी वो 59 थी, जिसपे यूसुफ रजा गिलानी खुद बतौर चेयरमैन सेनेट जो है वो वोट नहीं कर सकते थे। 58 का नंबर था जिस पर 5 अरकान जो जमीयत उलमा इस्लाम फे के हैं उन्होंने इसकी हिमायत की और इसके अलावा बीएनपी मैंगल के 2 अरकान जो है उन्होंने इस आईनी तरामीम की हिमायत की। जो वफाकी हुकूमत है उसके इत्तेहादियों के अलावा जो अपोजिशन के सेनेटर्स हैं उसमें से जो है वो इस तरमीमी बिल के हक में 7 जो अरकान हैं उन्होंने इसके हक में जो है वोट किया है, जबकि इसके अलावा जो 5 अरकान है इसमें वो जमीयत उलमा इस्लाम फे के हैं, उन्होंने आज ही जो है वो इन आईनी तरामीम के हक में वोट की जो है वो हिमायत की थी। ताम जो बीएनपी मैंगल के जो 2 सेनेटर्स हैं उन्होंने जो उनकी पार्टी पॉलिसी लाइन थी जो बाकायदा तौर पर जो उनके सरबराह की जानिब से जो 63A का लेटर जारी किया गया था उसके मुताबिक जो है वो यानी अब्सटेन करना था, लेकिन वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। इसी तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर डायरेक्शन जारी की गई थी कि वो अब्सटेन करेंगे और किसी सूरत भी जो है वो नहीं करेंगे। इस वक्त जो सेनेटर शहरी रहमान है पार्लिमानी लीडर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो इसके हक में उन्होंने अपना जो है वो वोट कास्ट किया, सेनेटर इसहाक डार ने किया और इस वक्त जो सेनेटर मोहसिन नकवी हैं वो इस आईनी तरामीम के हक में जो है वो अपने यानी उन्होंने हक के राय का इजहार किया है। और आखिर में आजम नज़ीर तारड़ जो वज़ीर कानून है और इस वक्त जो फारूक एच नाइक हैं जो आखिरी जो है वो रुकन है जिन्होंने इस आईनी तरमीम के हक में जो है अपना वोट कास्ट किया है, जबकि जो आईनी तरामीम है इसके हक में जितने भी अरकान थे वो इस वक्त जो आइस की लॉबीज हैं जो चेयरमैन सेनेट के राइट साइड पर जो है वो है वहाँ पर वो चले गए और इस वक्त ऐवान में आप देख भी सकते हैं जो अटॉर्नी जनरल है मंसूर अवान वो इन तमाम अमल की जो है वो निगरानी कर रहे हैं और वो जो है वो तमाम अमल की निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो सेनेट सेक्रेटरीट का स्टाफ है उनकी भी रहनुमाई कर रहे हैं तो इस अमल में, और जबकि दूसरी जानिब जो है वो मुशीरी सियासी उमूर जो राना सनाउल्लाह हैं वो इस वक्त ऐवान में जो है वो मौजूद हैं, जबकि जो अपोजिशन के सेनेटर्स हैं वो भी अब जो है वो नोस की लॉबीज की तरफ जो है वो जा चुके हैं। उनकी जानिब से इस जो आईनी तरमीमी बिल की जो है मुखालफत। ठीक है, वकार हमारे साथ ही रहेगा, यकीनी तौर पर अटॉर्नी जनरल भी तमाम मामले की निगरानी कर रहे हैं। यासिर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। यासिर, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? और एक मरहला तो मुकम्मल हो चुका है, दूसरे मरहले की तरफ अब जाएंगे। देखिए, सेनेट ने 26वीं आईनी तरमीम की तमाम जो 22 शिकें हैं उनकी मंजूरी दे दी है। जैसे वकार बता रहे थे कि इस वक्त जो है वो दस्तखत किए जा रहे हैं, सिग्नेचर किए जा रहे हैं और जो चेयरमैन सेनेट है उनकी राइट साइड पर हुकूमती और उनके साथी जो सेनेटर हैं वो इस वक्त इस बिल के ऊपर दस्तखत करने के बाद लॉबी में जा चुके हैं, जबकि लेफ्ट साइड पर जो चेयरमैन सेनेट के अपोजिशन के जो तमाम सेनेटर हैं वो भी लॉबी में जा चुके हैं। इस वक्त जो मंसूर उस्मान अवान है वो इस वक्त चेयरमैन सेनेट को तमाम तर जो बिल के हवाले से जो भी चीजें हैं उनके हवाले से आगाह कर रहे हैं। दूसरी जानिब सेनेट सेक्रेटेरिएट का जो स्टाफ है इस वक्त वो भी रहनुमाई फरमा रहा है चेयरमैन सेनेट की। अब सेनेट से मंजूरी के फौरन बाद, चूंकि आज कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 6 बजे बुलाया गया था और
कभी इम्कान यही है कि जो जराए हैं कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के, वो ये बता रहे हैं कि जैसे ही सेनेट से ये 26वीं आईनी तरामीम का बिल जो है ये पास हो जाएगा, तो साथ ही कौमी असम्बली का इजलास जो है वो शुरू होगा और कौमी असम्बली के इजलास से जो है वो आज ही के रोज इस बिल की मंजूरी जो है वो करवाई जाएगी। अभी तक जो है वो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इस हवाले से तमाम तर इंतजामात जो है उनको मुकम्मल कर लिया है और मामूल के मुताबिक जो है वो इजलास शुरू होगा और इजलास शुरू होते ही जो इजलास का एजेंडा है उसको मौखर किया जाएगा और 26वीं आईनी तरामीम का बिल जो है जो सेनेट से पास होगा उसके बाद कौमी असम्बली में जो है वो पेश कर दिया जाएगा। इस वक्त जो है वो राना सनाउल्लाह जो मौजूद हैं सेनेट के ऐवान में और उनके साथ अगर इस वक्त उस्मान मंसूर अवान जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं चेयरमैन सेनेट से, नादरीन देख सकते हैं और ब्रीफिंग दी जा रही है। इस बिल की जो दस्तखत किए हैं तमाम जो हुकूमती सेनेटर मौजूद थे और उनके जो इत्तेहादी उनकी जानिब से, और उसके बाद जो है वो अब कुछ ही देर में जो चेयरमैन सेनेट हैं वो दोबारा से तमाम जो सेनेटर हैं वो हुकूमती हों, इत्तेहादी हों और साथ में जो अपोजिशन के उनको वापस बुलाएंगे सिवान के अंदर और फिर अनाउंसमेंट होगी बाकायदा तौर पर। लेकिन जो 26वीं आईनी तरामीम है उसकी जो 22 तरामीमें हैं उनको मंजूर कर लिया गया है सेनेट में और अब ये जो सिलसिला है इस बिल के पास होने के बाद कौमी असम्बली का इजलास जो वो शुरू होगा और कौमी असम्बली के इजलास से जो है वो 26वीं आईनी तरामीम का जो बिल है उसको पास करवाया जाएगा। जी ठीक है, यासिर हमारे साथ ही रहिएगा। अदिल बड़ाई, जिस तरह से अभी यासिर ने बात की, वकार भी बता रहे थे हम लोगों को कि ये जो मरहला वार तमाम चीज़ें हो रही हैं, अब जो जैसे अगर सेनेट से हम फ्री हो जाएंगे, इससे यहाँ से हमारी चीज़ें मंजूर हो जाएंगी और बाकायदा तौर पर चेयरमैन सेनेट ऐलान भी कर देंगे, तो फिर कौमी असम्बली का इजलास कब तक एक्सपेक्टेड है? देखें, उसका जो वक्त है जो बुलाया गया था उसमें तो ताखीर सिर्फ इसलिए हुई कि जो सेनेट की कार्रवाई जो है पहले ये कंक्लूड हो जाए और अब सेनेट की कार्रवाई ऑलमोस्ट कंक्लूड होने के करीब है। अब ये अनाउंसमेंट होने में चंद मिनट्स बाकी हैं। चेयरमैन सेनेट जब ये अनाउंस करेंगे कि आईनी तरमीम जो है ये 65 वोटों से मंजूर कर ली गई और 64 इसमें 2/3 अक्सरियत के लिए मिनिमम वोट दरकार थे और ऐसे में जब ये अनाउंसमेंट हो जाएगी उसके बाद जो एक सारी जो कार्रवाई दस्तावेजी शक्ल में इसको अनाउंस करने के बाद ये कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिया जाएगा और कौमी असम्बली में अरकान को आज हुकूमत ने तमाम अरकान को इत्तेहादी जमातों ने उनकी इत्तेहादी जमातों ने आज इस्लामाबाद में तलब कर रखा है, तो आज ही कौमी असम्बली से इसकी जो मंजूरी है वो कराई जाएगी और जो नंबर का जो मामला था, शॉर्टफॉल था, जो हैरान कुन सूरत हाल उस वक्त थी जब पहली मर्तबा जो हेड काउंट किया गया और पीटीआई के अनबास जो हैं वो इस पर इतराज उठा रहे थे मुसलसल और उन्होंने खुद इसको काउंट किया जब 65 अरकान जो हैं वो पूरे हुए, तो बुनियादी तौर पे वो पहली गिनती थी और वो पहला चैलेंज था कि जिसमें सब देखना चाहते थे कि ये नंबर कैसे पूरा होगा। लोग तवक्को कर रहे थे और अब अनाउंसमेंट की जा रही है। इस वक्त अनाउंसमेंट की जा रही है, जो कहा जा रहा है कि जो यूसुफ गिलानी की जानिब से कहा जा रहा है कि जो रिजल्ट्स हैं काउंट किया जाए। सेक्रेटरी को हिदायत की गई है कि रिजल्ट जो है वो शेयर किए जाए ताकि यूसुफ गिलानी जो है उनसे अनाउंस करें। अब से 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर ये जो नतीजा है ये अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, अब से आप हमारे साथ ही रहिएगा, हम अनाउंसमेंट को सुनाएंगे अपने नाज़रीन को। The results of the division has been received. हाँ, नहीं अभी वो आए तो सही। Please take your seats.
result of the division. The result of the division has been received. Therefore, the entrances be unlocked. And all members are requested to be seated. सब आ जाएं तो फिर रिजल्ट किधर है? दे दे मौलाना ताउर रहमान बोलना चाहते हैं। ओके ओके। The results of the division has been received. Therefore, all the entrances be unlocked. All members are requested to be seated. I now announce the result of voting. Please take your seat. I have to announce the voting. Please be seated. I now announce the results. 60 Sherry, please take your seat. I am announcing the results. Please order in the house. Please order in the house. 65 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. Leader of the House. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदुल मुसल्ली अला रसूलिल करीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा हिस्टोरिक दिन है। कई महीनों की मेहनत के बाद, और उसमें मैं सबको क्रेडिट देता हूँ जिन्होंने इस काम में हिस्सा लिया। इसमें तमाम जमातें शामिल हैं। इसमें पीपल्स पार्टी है, इसमें जमीयत उलमा इस्लाम है, इसमें MQM है, इसमें बाप है, अवामी नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी है, PMLQ है, BNP है और इंडिपेंडेंट्स हैं। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बाबुल भुट्टो साहब ने बड़ी कमिटमेंट के साथ जो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी 14 मई 2006 को लंदन में साइन हुआ, और उसके बाद तकरीबन तमाम जमातों ने उसको कुछ हफ्तों के बाद आके इंडोर्स किया, जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल थे। और ये एक अनफिनिश एजेंडा चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी का रह गया। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की शक्ल में देख रहे हैं, तो सब ने अपनी अपनी जगह पे इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो मेन अलाइज थे, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि तमाम जमातें इंक्लूडिंग PTI अगर मिलकर हम ये करें कंसेंसस के साथ। पहली मूव आपने देखी जनाब चेयरमैन कि नेशनल असम्बली से एक कमेटी बनवाई गई, जिसमें उस वक़्त की जो इश्यूज़ थी उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का उसमें TOR में ऐड किया गया। उसकी कई मीटिंग्स हुई, करीबन 16 मीटिंग्स हुई, और उसमें आपको रिक्वेस्ट किया गया कि सेनेटर साहिबान को, वो पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं थी, वो नेशनल असम्बली की स्पेशल कमेटी थी,
लेकिन आपको रिक्वेस्ट करके स्पेशल इन्वाइटीज़ के तौर पे तमाम पार्लिमानी लीडर जो सेनेट में थे उनको शामिल करवाए गए। उसके बाद हमारी पूरी कोशिश थी जमीयत उलमा इस्लाम के साथ, और चूँकि वो इस वक्त अपोजिशन में बैठे थे इधर भी और नेशनल असम्बली में भी, तो हमने एक नहीं शायद दर्जनों राउंड्स उनके साथ लगाए। आपने देखा कि कई जो वर्किंग ड्राफ्ट, मैं कहूँगा, मैं उसको ड्राफ्ट अमेंडमेंट नहीं कहूँगा, वर्किंग ड्राफ्ट बने और कई मीडिया के रिकॉर्ड पे हैं, और वो उसमें कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इवेंचुअली चंद दिन पहले जो फाइनल जो ड्राफ्ट था वो कमेटी में पेश हुआ, जिसमें फिर तमाम जमातों के नुमाइंदगान शामिल थे। और मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि पीटीआई के जनाब अहमद डोगर साहब भी उस दिन शामिल थे, और क्लॉज बाय क्लॉज जनाब लॉ मिनिस्टर साहब ने उसमें हर चीज़ को एक्सप्लेन किया, और उसके बाद कमेटी ने यूनानिमसली, अब उनके अली ज़फ़र साहब उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ना लें, पर यूनानिमसली वो वहाँ बिल पास हुआ। अहमद डोगर साहब मौजूद थे, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद ये इंतकामी नहीं है। अच्छा, ये मुझे पता है, ये मैं इसलिए इनको कह रहा हूँ, मुझे पता है मेरी बात मान लेंगे। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उसके बाद भी हमने कमेटी की कंसेंसस के बावजूद हम आ सकते थे यहाँ, और ये नंबर्स की बात नहीं है। कोशिश ये थी कि तमाम जमातें ऑन बोर्ड हों। आपने देखा कि मैंने करीबन दर्जन जमातें आपको गिनवाई हैं, महल बारिंग पीटीआई, बाकी तमाम जमातें अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हिस्सा। उनका अपना एक असूली एक जो भी स्टैंड है, वो ज़ाहिर है कि जमहूरियत में ये उसका हुस्न है कि किसी को आप बुलडोज या ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन हमने ये हमने को 3 दिन पहले का हमारा प्लान था कि हम इसको लाएं, और मैं मेंबर्स के सब्र व तहम्मुल का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि तमाम मेंबरान, एक राउंड आज से कुछ हफ्ते पहले हुआ, उस वक्त भी यही था कि कंसेंसस से किया जाए, कोशिश की गई, लेकिन चूँकि मज़ीद टाइम मांगा गया, ख़ासकर जनाब हज़रत अपना मौलाना हमारे जो हैं जमीयत उलमा इस्लाम के फजलुर रहमान साहब, उनकी ख्वाहिश थी कि वो उन्होंने पूरी कोशिश की। और मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशाइन बात थी कि कल हम फिर फाइनल आ रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पीटीआई को दोबारा मिल लेने दें। मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा कि वो जो कोई डिमांड थी कि मीटिंग अरेंज कराएं, हमने सब कुछ किया, और इसी नीयत से किया कि शायद कि वो भी आ जाए, लेकिन उनकी अपनी ज़ाहिर है कि आइनी और उनका अपना कानूनी उनके तमाम फ़राइज़ भी हैं, और उनके प्रोगेटिव्स भी हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, उनका प्रोगेटिव है जो फ़ैसला करें। लेकिन कल जो हज़रत फजलुर रहमान साहब ने मौलाना ने प्रेस में कहा कि कोई ऐसी शिक या कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे कोई, कल शाम को जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ बिलावल भुट्टो साहब थे, और उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं जिस पे हमारा इत्तफाक नहीं है। तो ये मुसवदा जो है वो कम से कम इन तमाम जमातों के अलावा जमीयत उलमा इस्लाम भी उसमें शामिल थी कल रात, और इसीलिए आज हमने फिर ये प्रोसेस किया। मैं समझता हूँ कि इस हाउस ने, जहाँ तक मुझे याद है, कि कोई आइनी तरमीम यहाँ से पहले ट्रिगर नहीं हुई। ये शायद ये पहली आइनी तरमीम है जो इस हाउस से ट्रिगर हो के इस हाउस ने उसको पास किया है। तो मैं दिल की गहराइयों से तमाम मेंबरान को, अपने साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला के फजल व करम से इसका जो सेकंड पार्ट है, ज़ाहिर है कि ये पहली दफ़ा होगी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल, जहाँ तक मेरी याददाश्त है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो यहाँ पास हुआ आप ट्रांसमिट करेंगे नेशनल असम्बली में, और इंशाअल्लाह नेशनल असम्बली में पास होगा, और फिर ये आइन का हिस्सा बन जाएगा जब सदर मोहतरम उसको असेंट देंगे। लेकिन जो बात कुछ एक दो साथियों ने की, ये कोई पर्सनल किसी का ज़ाती एजेंडा नहीं है, ये गलत फहमियों पे और मफरूज़ों पे उसकी बुनियाद थी। किसी वक्त पर्सन स्पेसिफिक की बात हुई कि फ़लाँ किसी को लाना चाहते हैं, किसी वक्त उम्र की बात हुई, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती रहीं और वर्किंग ड्राफ्ट बदलते रहे, और इवेंचुअली जैसे मैंने कहा कि हुकूमत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और ख़ासकर पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ये बिल्कुल डिटर्मिन्ड थे कि हमने लास्ट मिनट तक कोशिश करनी है कि अफ़वाम व तफ़हीम से सबको साथ लेकर चलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का बहुत करम है। इसके साथ आप देखें कि अल्लाह ताला करेंगे जो इंटेंशन है कि ना सिर्फ वो 18 साल पुरानी एक अनफिनिश एजेंडा आज मुकम्मल हो रहा है,
फेडरल गवर्नमेंट में भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अपना फेडरल सिस्टम में आपको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आप बना रहे हैं, और इसके साथ साथ आपने सूबों को भी वो यानी उनके लिए भी आइन में लिख दिया है, उनको आइनी एक आपने अवेलेबल कर दिया है। लेकिन क्या करना है, अपनी जब वो तैयारी होगी, जब वो कर सकेंगे तो उनका काम है एक रेजोल्यूशन सिंपल पास करनी उनकी असम्बली, ताकि वो भी असम्बली को ऑन बोर्ड करें। लेकिन इसके साथ जो मैं समझता हूँ कि बहुत लंबी एक्सरसाइज जनाब लॉ मिनिस्टर साहब कर चुके हैं, कर रहे हैं, कि जो आप CRPC में जो आप वो 100 के करीब अमेंडमेंट्स आनी है, आम आदमी के लिए हैं, स्पीडी जस्टिस के लिए हैं, जल्दी उनकी जो रिट है या उनकी अपील है उसको सुनने के लिए है, उसमें टाइम बाउंड है कि किस तरह कितनी जल्दी वो फैसले करें। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये उसका अभी आपके कटर रेजर है मेरे नज़दीक, इब्तदाइया है। असल जो काम है वो हमारी कंट्रीब्यूशन होगी कि वो जो 150 साल पुराना CRPC चल रहा है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। मेरी गुजारिश होगी कि तमाम जमातें ने जो ये काम किया है और एक जमात बाहर रह गई है उसमें वो भी शामिल हो। देखिए उनके तजर्बा, उनका भी अली ज़फ़र साहब हैं, अहमद ख़ान साहब हैं, इनके वकला के जो एक्सपीरियंस है वो उसको हम आवाम के लिए मिल के उसको करें। अब जब आप लीडर ऑफ द हाउस बनेंगे आपको प्रेरोगेटिव होगा खान साहब। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से हमने मैं नाम दोबारा लूंगा जी, खान साहब जितने मर्जी, वो आपसे गिला कर रहे हैं, मेरे साथ तो गिला नहीं है, मैं तो नाम नहीं आपको तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ जनाब चेयरमैन कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए उनका राइट है, जैसे मैंने कहा उन्होंने नहीं वोट दिया, उन्होंने कहे तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी ये शुरुआत है। मिल के जो बाकी काम है, जो बड़ा काम है, 150 अमेंडमेंट्स, 100 अमेंडमेंट्स के करीब 150 साल पुराने कानून में, वो हमें वहाँ जो इम्प्रूवमेंट करेंगे, जिस तरह हमने इस आइनी तरमीम में खुले दिल के साथ सबको इंगेज किया, सबको, और कई ड्राफ्ट, शायद ये पता नहीं 26वां ड्राफ्ट हो जो आज फाइनल हुआ है, 26वीं तरमीम के अलावा 2 दर्जन ड्राफ्ट के करीब गुजर चुके हैं। तो इंशाल्लाह उसमें भी खुले दिल के साथ सब मिलें, सब बैठ के उसको अमेंड करें और उसको इंशाल्लाह नाफिज मुल्क में वो भी हो, ताकि लोगों की जो यानी जुडिशल तकलीफ़ें हैं, आम आदमी को इंसाफ सस्ता जल्दी मुहैया हो। मैं एक दफ़ा फिर दिल के गहराइयों से, मैं जहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत, जनाब बिलावल भुट्टो साहब की मेहनत, और फिर मैं आई विल बी फेलिंग इन माई ड्यूटी अगर मैं लॉ मिनिस्टर साहब और अटॉर्नी जनरल को स्पेशली ना मैं मुबारकबाद दूँ। ये शहरी का नाम है आप, बिल्कुल, मैं शहरी रहमान साहब को भी, फिर अगर आप वहाँ जाएंगे तो फिर मैं नवीद कमर का भी मुझे नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी टीम, ये जो टीम है, कोर टीम, मुर्तज़ा वहाब साहब जो इनके पीपल्स पार्टी के जो लीगल एडवाइज़र थे, कामरान मुर्तज़ा साहब, इन्होंने बहुत टाइम दिया। यू कैन नॉट इवन इमेजिन। अब लॉ मिनिस्टर साहब तो करीबन बौंतरे हो गए थे कल तक, तो शुक्र है कि आज वो रिवाइव करेंगे, अब वो रिलीव होंगे, कुछ इनको अल्लाह करे कि 2-4 दिन इनको कुछ छुट्टी मिले, ये आराम करें। तो मैं जनाब चेयरमैन आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हम आज सुरखरू हुए हैं, हमने अपना काम कर दिया है। गुड लक टू द नेशनल असम्बली, इंशाल्लाह वहाँ भी अल्लाह ताला कामयाबी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट देखें, मैं बैठा हूँ, उसका ये है कि फिर अजन करना पड़ेगा। आप इन्हीं का आपका बिल है वो पहले कर, ठीक है, ठीक। वेयर इज द बिल? एक अमेंडमेंट है सर, पास करनी है। अच्छा। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, may move order number 2B. Mr. Chairman, I, Senator Azam Nazir Tarad, Minister for